Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you know, we are discussing reproductive biology. In this reproductive biology, we have discussed the structure of this microsporangium, which we call as pollen sac. We have discussed what is the role being played by this epidermis for the development of the pollen grains. We also discussed what is the role being played by this endothecium, and we discussed what is the role being played by those middle layers. Then we have discussed that there is innermost layer of this pollen sac. This is physiologically important layer which is directly contact with the sporogenous tissue. Please remember, this layer is called as tapetal layer. The cells are called as tapetal cells. Today, it's an important topic in this reproductive biology to discuss the types of this tapetum, and we have to discuss the role played by this tapetal layer. बेटा अगर आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में लास्ट में मैंने बताया था कि टैपेटल सेल्स पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं या मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इनके पास हो सकते हैं. सेल्स एक्टिव है, सेल्स एक्सप्रेसिव है. इसका मतलब है दे आर एक्टिव बिकॉज दे आर सिंथेसाइजिंग मोर मटेरियल. मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव. They are synthesizing more enzymes here, and hence such cells have the property that they will be releasing more and more material for the benefit, for the development of the pollen grains. Last पे मैंने आपको बताया था कि on the basis of behavior of the tapetal cells, there are two types of tapetum found in case of those angiosperms. My dear students, today we will discuss the first type of this tapetum. We will discuss what is the role played by the first type, that is called as periplasmodial type. Our topic is types of tapetum, but what is the source of the classification on the basis of behavior of the tapetal cells. The first type, this is called as periplasmodial type. You'll call this as invasive type. So what is the characteristic feature of these type of tapetal cells? You have to remember, if the cells of the tapetum have property that their inner tangential walls, this is inner tangential wall, this is outer tangential wall, and their side walls, radial walls, if they are degenerated early, you have to say that this type of tapetum is called as periplasmodial type of tapetum. बेटा याद रखिए, अगर tapetal cells ने earlier death की, अगर इनके cells पहले ही ये dead हुए हैं, so अगर इनके cells में पहले ही programmed cell death हुआ है, अगर इनके inner tangential walls जो हम यहां पे represent करेंगे, ये inner tangential wall है जहां पे मेरा मार्कर है, या ये रेडियल वॉल्स, अगर एक टैपेटल सेल ने इनर वॉल्स को डिजेनरेट किया एट द अर्लियर स्टेज, you have to say that this is the first type of the tapetum called as periplasmodial type, or this is called as invasive type. Let us today explain what is the role being played by this type of tapetum, and whenever these cells become dead, what is the material that is being released. So we'll today explain. But before that, if the cells degenerate at the earlier stage, losing their inner wall, particularly remember inner walls and radial walls, inner and radial walls are directly facing the sporogenous cells. If these walls are degenerated at the earlier stage, you have to remember that there is the first type of the tapetum. This is called as periplasmodial type. Now question arises. Sir, अगर पहले ही टैपेटल सेल्स की डिजेनरेशन हुई है, पहले ही टैपेटल सेल्स की डेथ हुई है, then what is the material that is oozing out from these tapetal cells? बेटा मैं आपको बताऊंगा. ये टैपेटल लेयर है, सपोज डायग्रामेटिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये एंथरलॉक्यूल है, ये एंथरलॉक्यूल है, ये एंथरलॉक्यूल है. इस एंथरलॉक्यूल के पास स्पोरोजीनस सेल्स है. नाउ व्हाट हैपेंस,
ये पेरिप्लाज्मोडियल टैपेटम जो होता है, इसके जो इनर वॉल्स होते हैं ये सबसे पहले खत्म हो जाते हैं, दे ब्रेक। यस, इनकी डेथ होती है। जब इनकी डेथ होगी, सेल्स की डेथ होगी, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट सेल्स का होता है, जाहिर सी बात है वो तो बाहर निकलेगा। ये जो प्रोटोप्लास्ट सेल्स का है, जाहिर सी बात है वो भी बाहर निकलेगा। इसका मतलब है ये जो टैपेटल लेयर्स है, टैपेटल लेयर्स में जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सब एंथरलॉक्यूल की तरफ बाहर निकलता है। प्लीज रिमेंबर, whenever this protoplast gets aggregated, बहुत सारे सेल्स का प्रोटोप्लास्ट बाहर निकला है। Whenever it is aggregated, this aggregation of this protoplast is called as periplasmodium. This is syncytium. This aggregation of different materials from different cells here, this is what is called as periplasmodium. Sir, then जब ये पेरिप्लाज्मोडियम बाहर निकलता है, यू नो, इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एंथरलॉक्यूल है। जरा बेटा मुझे बताइए, एंथरलॉक्यूल के पास क्या है? सर, सुपोरोजिनस सेल्स है। सर, सुपोरोजिनस सेल्स क्या है? पोलन मदर सेल। व्हाट इज पोलन मदर सेल? इट इज मदर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी फ्यूचर पोलन ग्रेन इन्हीं से बनते हैं। यू हैव टू रिमेंबर, whenever this periplasmodium is released, whenever it is aggregated, whenever it comes from this type of tapetum here, प्लीज रिमेंबर, यही कल जाके इस एंथरलॉक्यूल में जो पोलन मदर सेल्स होते हैं, इनको सराउंडिंग, इनके लिए ये सराउंडिंग देते हैं। दैट मीन्स पोलन मदर सेल्स आर बैथड इन व्हाट इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मोडियम, ये इसी में बैठ जाते हैं। सो यहां से फ्लड लाइक सिचुएशन अराइजेस देयर, यहां से मटेरियल आया, यहां से मटेरियल आया, यहां से मटेरियल आया। सो दैट मीन्स ये मटेरियल एग्रीगेट होता है, ये पोलन मदर सेल्स होते हैं। नाउ दे आर बैथड विद इन व्हाट इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मोडियम। Now question arises, sir, when they are bathed within this periplasmodium, then what? You have to say, the first role played by this periplasmodium, it is this periplasmodium, it is these degenerated tapetal cells, it is this periplasmodium, this material, please remember, it nourishes, it acts as nurse layer towards pollen mother cells. पहला रोल है। सो यहां से जो मटेरियल निकला है, यहां से जो मटेरियल निकला है, दिस मटेरियल रीचेस टुवर्ड्स पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल्स आर हंग्री हियर। रिमेंबर, ये न्यूट्रिएंट जो है, ये मटेरियल जो है, यहां से आता है। नाउ दिस मटेरियल इज सराउंडिंग द पोलन मदर सेल्स। इट मीन्स दैट दोज टेपेटल सेल्स आर एक्चुअली मेंट टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द पोलन मदर सेल्स। बेटा, पहला रोल है कि जो पेरिप्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टैपेटम है, इनके जो इनर वॉल्स होते हैं, इनकी सेल्स की जब डेथ होती है, तो वहां से जो मटेरियल निकलता है, वो मटेरियल पोलन मदर सेल्स की तरफ आता है। When it reaches towards the pollen mother cells are bathed there, and hence the material within the periplasmodium goes towards the pollen grains or pollen mother cells. Hence the first role that this type of tapetum acts as a nurse layer, it acts as a nourishment layer, and remember, such material provides nutrients towards the pollen mother cells. इसलिए पहला रोल मैंने लिखा है। इसके बाद सेकंड रोल, इसके बाद जो दूसरी फंक्शन होगी इस पेरिप्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टैपेटम की, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यू हैव टू एवर रिमेंबर हियर। सर, व्हाट इज दैट? इस रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है, हालांकि ये हमारा अलग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसुपोरोजेनेसिस। इसकी मैं यहां पे एक हिंट देता हूं। बेटा, आपको पता है एंथरलॉक्यूल के अंदर जो सेल्स होती है ना बेटा, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज पोलन मदर सेल्स। ये आपको पता होना चाहिए। सर, दीज आर फ्यूचर पोलन ग्रेन्स। फ्यूचर पोलन ग्रेन्स इन्हीं से बनेंगे। सर, ये पोलन मदर सेल्स जो है, इन्हें हम कह सकते हैं माइक्रोसुपोर मदर सेल्स एज वेल। वी कॉल देम एज MMC, माइक्रोसुपोर मदर सेल। Actually, these are diploid in nature. These are 2M.
लेकिन जब इनसे पोलन ग्रेन बनेंगे बेटा, दीज आर पोलन ग्रेन्स। आपके लिए अब क्वेश्चन एक है, पोलन ग्रेन इन्हीं से बनते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट वन थिंग, यहां माइटोसिस हुआ कि मियोसिस? यहां मियोसिस हुआ है। इसीलिए जब पोलन मदर सेल्स की मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद पोलन मदर सेल्स से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। लेकिन यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, यू कुड बी कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल, अंडरस्टैंडिंग रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। लेकिन आपको यह पता है जब मियोसिस होती है, एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। जो 4 सेल्स यहां पे बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, वी कॉल द ग्रुप ऑफ दोज 4 पोलन ग्रेन्स एज पोलन टेट्राड। टेट्राड मीन्स ग्रुप ऑफ 4 सेल्स हियर, 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। एंड रिमेंबर दिस प्रोसेस whereby pollen mother cells, these cells undergoing meiosis to give rise to the pollen grains. Please remember, this process is called as microsporogenesis. This is called as microsporogenesis. Why microsporogenesis? Microspore is another name for pollen grain. Genesis means production. Production of formation of microspores or pollen grains. This process is called as microsporogenesis. It involves important process here. This important process is called as meiosis here. So इसीलिए आपने याद रखा यहां पोलन टेट्राड बन गया। लेकिन we don't have to deviate from our topic. Our topic is actually role played by the first type of tapetum, that is called as invasive type of tapetum. This is called as periplasmodial type. बेटा invasive इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल्स की डेथ हुई है ना, अभी मैंने बताया देयर इज फ्लड लाइक सिचुएशन, तो यहां पे इस सेल ने इन्वेड किया अपने मटेरियल से, इस सेल ने इन्वेड किया मटेरियल से, इस सेल की डेथ से मटेरियल ने इन्वेड किया है टुवर्ड्स स्पोरोजेनस सेल्स, हेंस वी कॉल इट एज इन्वेसिव टाइप ऑफ दिस टेपेटम हियर। कमिंग टू द पॉइंट, व्हेनेवर पोलन मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द पोलन टेट्राड, कहते हैं जब ये पोलन टेट्राड बनता है ना बेटा, इस पोलन टेट्राड को कवर करने के लिए इस बॉटनिकल वर्ल्ड में एक खास टिश्यू होता है। दिस टिश्यू विच सराउंड्स दिस पोलन टेट्राड, ऑल द 4 पोलन ग्रेन्स, प्लीज रिमेंबर दिस इज ए बायोपॉलिमर। दिस बायोपॉलिमर इज कॉल्ड एज कैलोस। कैलोस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बॉटनिकल वर्ल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड एज वेल। इसीलिए पोलन टेट्राड को कवर करने के लिए एक बायोपॉलिमर बैठा है जो यहां से भी कवर करता है और यहां से भी सराउंडिंग इन 4 सेल्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस इज कैलोस। अब इसके बाद जब टेट्राड बना है तो टेट्राड ब्रेक होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पोलन ग्रेन को यहां पे अटेंशन देना है, इंडिविजुअल पोलन ग्रेन को यहां पे डेवलप करना है एक्जीन। इंडिविजुअल पोलन ग्रेन के लिए डेकोरेशन होनी चाहिए, लेयर्स पे लेयर्स आने चाहिए ताकि इसके मेल गमीट्स की प्रोटेक्शन मिल जाए। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसॉल्व दिस कैलोस। कैन यू टेल मी, वो एंजाइम जो कैलोस को डिसॉल्व करेगा, इज दैट एंजाइम पैक्टिनेस? नो। Cellulase? Never ever. This enzyme which dissolves this callose material, this enzyme is called as callase. This is also called as gluconase enzyme. अब क्वेश्चन एक है, सर जब यहां पे पोलन टेट्राड्स बनते हैं, पोलन टेट्राड को डिसॉल्व करने के लिए 4 पोलन ग्रेन्स को मुझे बाहर निकालना है। इसीलिए जो सेकंड फंक्शन होती है इस पेरिप्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टेपेटम की, वी हैव टू से इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम। इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम यूज्ड टू डिसॉल्व कैलोस अराउंड पोलन टेट्राड। बेटा कितने फंक्शंस याद रखे लास्ट में? आई विल सम अप ऑल दीज फंक्शंस हियर। 2 फंक्शंस आपने याद रखे। एक फंक्शन आपने याद रखी है कि जब डेथ होती है मटेरियल आता है, इट इज बैथिंग द पोलन मदर सेल्स, दैट मीन्स कुछ न्यूट्रिएंट्स आएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स पोलन मदर सेल्स की तरफ आएंगे। एक बात।
दूसरी बात है, जब पोलन मदर सेल्स मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो कैलोस मटेरियल आता है कैलोस को ब्रेक करने के लिए, ताकि फ्रीडम मिल जाए इन पोलन ग्रेन्स को। इसलिए यहां पे एक एंजाइम आता है, दिस एंजाइम विच डिसॉल्व्स this callose material here, so that pollen grains are released from this tetrad here. They get their freedom for the next developmental purposes here. Please remember, this enzyme is called as callase or gluconase enzyme, and it is this periplasmodial type of tapetum which releases this enzyme called as callase. Beta, this was what is called as the role played by the first type of the tapetum here, this first type of tapetum where the cells dissolve at the earlier stage, this was called as periplasmodial type of tapetum. After that, there is another type of tapetum. मैंने पहले ही बताया, on the basis of behavior of the cells, कि cells इनके walls पहले degenerate हो जाए या late, there are two types of what is called as this tapetum here. We are going to explain second type of tapetum here. This type of tapetum is called as glandular type of tapetum. This is glandular tapetum, or this is called as secretory type of tapetum. आपके लिए एक point है यहाँ पे. This is important. Sir, why it has been called as glandular? Why it has been called as the secretory type? I will tell you. The cells remain intact up to last developmental stages. That means up to development of pollen grains. जब तक पोलन ग्रेन्स का फुल डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक ये बराबर इंटैक्ट रहते हैं. दैट मीन्स ये वाला जो लेयर है इसके सेल्स जो होते हैं दे नेवर गेट डिजेनरेटेड हियर एट द अर्लियर स्टेजेस. अगर एक टैपेटल लेयर लास्ट स्टेज तक इंटैक्ट रहता है, never it loses the layers here, never the cells degenerate here, it remains intact up to the last stage till the development of the pollen grains here. Please remember, this type of tapetum will be called as glandular type of, or what is called as secretory type of the tapetum here. लेकिन बेटा याद रखिए, sir, why this is called as glandular or secretory? Gland आपको पता है इनकी सब ह्यूमन बींग्स, वो एक पार्ट होता है बॉडी का जहां से रस निकलता है, जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, जहां से एंजाइम्स निकलते हैं. सेम इज द केस विद दिस टाइप ऑफ टैपेटम. द सेल्स विल नॉट डिजेनरेट, लेकिन वो इंटैक्ट होंगे एक ग्लैंड की तरह. ये मटेरियल टुवर्ड्स एंथरलॉक्यूल छोड़ेंगे इन पोलन ग्रेन्स के ग्रूमिंग के लिए, पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए. सिंपल सी बात है ना. अगर एक टैपेटल लेयर डायरेक्टली अपना मटेरियल छोड़ देता है विदाउट गेटिंग ब्रोकन डाउन, without getting disintegrated here, we will say this is acting as a gland here, it will be glandular here, or it secretes this material. When it secretes the material, बात तो बनती है ना, this will be called as secretory type of tapetum. पहली बात है. I will say it is well studied. अगर कंपेयर करेंगे ग्लैंडुलर टैपेटम और पहले वाले टैपेटम में, ज्यादा रिसर्च बेटा इसी पे हुआ है, ज्यादा स्टडी इसी पे हुई है. दूसरी बात है, इट हैज बीन वेल स्टडीड, इट हैज बीन फाउंड इन केस ऑफ डाइकोट्स. इन्हीं में इसको ज्यादा स्टडी किया गया है. ये पहली बात है. दैट मीन्स द ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टाइप ऑफ दिस टैपेटम, द सेल्स रिमेन इंटैक्ट अप टू द लास्ट स्टेज टिल द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स हियर. इट इज वेल स्टडीड एंड इट इज यूजुअली फाउंड इन केस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज डाइकोट्स हियर. इसके बाद क्वेश्चन एक है, सर व्हाट इज द मटेरियल बीइंग, what is the material being released from this glandular type of tapetum? So our topic will be now what is called as role of glandular tapetum here. Inshallah, it will be my next lecture. Next lecture पे मैं बेटा आपको बताऊंगा what is the role being played by glandular type of this tapetum. Okay, thank you.